So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as you all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having this static GK class. So right now let us begin. It's 8 p.m. So let us begin with today's class. Am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Okay. So in the last class we were here, right? So we had talked about the cold desert, and which of the following desert is also known as the cold desert, and we had discussed about Gobi Desert in detail. So C is the right answer to this question we had discussed, and I had discussed in the last class, so I believe you all should be answering it, that there is a river which crosses through this in China, and this is called as Sorrow of China. Which river I had discussed? बताइए. और ये जो ये गोबी डेजर्ट है ना, a cold desert on the border of Mongolia and China. Which river? I mean, this river is called as Sorrow of China also because it causes a lot of floods as it takes siltation from the Gobi Desert. Please tell me. I had discussed in the last class from here, Anna. So I believe that you all should be answering it. Sorrow of China कौन से river को कहते हैं? बताइए. Yes, good evening, Adrija, Mahendra, Utsav. Welcome to the class. Please tell me, this is which river which crosses through Gobi Desert and it causes floods in China. That is why it is called as Sorrow of China. I had discussed in the last class. The answer is Hwang Ho River. Okay, this is what you should be knowing about. Now, I want to ask one more question. Have you heard about Great Wall of China? Where do you find? So I'm giving 4 options. So this is option A. This is option B. This is option C. This is option D. Out of these 4 options, where will you find Great Wall of China? It's a very famous place, Anna. So yes, Mahendra, very good. You're right. Actually, to protect from the attacks from the north, this was made. So this is here, right? So option B. Yes, very good, Mahendra. So this is the place where you will find Great Wall of China. Okay? Yes, good. Let's move on to the next question because till now, till yesterday's class, we had done 9th question of this series. This is the question number 10. Yes. Good evening, Pranchi. Welcome to the class. The eastern coastal plain are located between where? Aravallis and Bay of Bengal, Eastern Ghat and Bay of Bengal, Sahyadris and Aravallis, Western Ghat and Arabian Sea. What is the right answer? Or if that's basic geography question, so I believe you all should be answering. Yes, Ashim, Mahendra, Pranshi, Shalja, you all are right. B is the right answer. Adrija, B is the right answer to this question. Okay, so eastern coastal plain की बात कर रहे हैं. So when you talk about that, so this is ये eastern ghats हो गया. This is western ghats, है ना? This is western ghat. This is eastern ghat, which is broken. So that is how I have made like this. पूछ कह रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां पर होगा? सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा होगा? देखो ये बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न घाट है, तो ये वाला जो है दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. नाउ प्लीज टेल मी वन मोर थिंग. इस ऑप्शन में मैंने कहीं पर आरावलीज लिखा हुआ, आरावलीज कह रहे सह्याद्रीज मेंशन किया है. व्हाट इज दिस? Which mountain ranges are called as Sahyadris? बताइए. I'm waiting for the response. Which mountain range? Yes, it's a mountain range. Which mountain range is called? Yes, Ashirwad. Very good. It is actually Western Ghat को कहते हैं. Western Ghat is called as Sahyadris. ठीक है? Very good, Ashim. हाँ.
So basically the right answer, let me now write it here. Western Ghat is also called as Sahyadris. Now one more question from this map, because these are asked in the exam. Now the Western Ghat and Eastern Ghat is meeting a place. Here you will find a mountain range and a biosphere reserve also. Which location this is called? I am talking about. I discussed in biosphere reserve class है ना. Yes, बताइए. I'm expecting everyone to answer because this is a basic question of geography. Yes, Ashim, very good. Pranshi, Mahendra, you all are right. Nilgiris. Nilgiri Biosphere Reserve, है ना. Nilgiri mountains are also there, है ना. Now, I have one question. This is a PYQ of AILET. ठीक है. That Eastern and Western Ghat meets at which place? So it's called as Nilgiri Biosphere Reserve. Now, I have one question. The question is, and this is also the previous year question of AILET, that here, I mean, you will find basically a flower, very famous flower, which blossoms every 12 years. And this is the favorite news article of the Hindu newspaper. Which flower is being talked about? This is a PYQ of AILET again. And whenever it blossoms, the Hindu newspaper always publishes it with a photo. ये AILET का PYQ है. So that's why I believe you all should be answering. So actually they had asked reverse. They gave the name of the flower. ठीक है. Neela Kurunji, very good. Shalja Shri, very good, fantastic. Neela Kurunji. ठीक है. इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत टेढ़ा सा है. Yes, very good. Pranjali, all right. आप सर्च करना नीला कुरुंजी द हिंदू. Just search this on Google. You will find a lot of articles of the Hindu. ठीक है. तो रिवर्स पूछे थे. I think this was asked नीला कुरुंजी are flowers which blossom every 12 years, found where, and they gave some options. ठीक है. So नीलगिरी में, which is actually और इस तरह एक क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी is actually between 3 states, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. ठीक है. तो दिखाता हूं. This is the state of Kerala. This is the state of Tamil Nadu. And this is the state of Karnataka. Okay. So at the junction of these three, you will find here Nilgiri Biosphere Reserve. Very famous. The first biosphere reserve under MAP program also. Nilgiri Biosphere Reserve, first biosphere reserve under MAB program, Man and Biosphere program. ये किसका initiative है? Man and Biosphere program. This is a initiative of which United Nations agency? Very famous. Man and Biosphere MAP program. मैंने Biosphere Reserve पे क्लास लिया है. जो search Biosphere Reserve career launcher, you will get a video. Not UNEP. बहुत फेमस है. इस क्वेश्चन आते हैं इस पर. Man and Biosphere program. Not UNEP. No. UNESCO. Very good, Shalja. हाँ. UNESCO's MAP program. सर्च करना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. ठीक है. सेकंड थिंग, आप यूट्यूब पे जाना, सर्च करना बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा लिखना करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. यू विल गेट माय वीडियो. एक मैंने बनाया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सर्च करना करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. यू विल गेट द वीडियो. ठीक है. खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन केरला आर नोन एज व्हाट? कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? Some people are saying B, some are saying C. B. Yes, the right answer is Western Coastal Plain in Kerala is called as Malabar Coast. B is the right answer to this question. अब चलो आप हमको बताओ, प्लीज टेल मी. तो चलो ठीक है, जैसे ये वाला है ना केरला में, दिस वन इज मालाबार कोस्ट. ठीक है, ये केरला स्टेट है. ये वाला कोस्ट को क्या कहते हैं? प्लीज टेल मी. इसका नाम क्या है?
मैं सारा कोस्ट भी रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ केरला, दिस इज द स्टेट ऑफ टीएन, तमिलनाडु। हाँ, सो ये क्वेश्चन मार्क वाला बताना है। यस, कोरोमंडल कोस्ट, यस आशिम एंड प्रंची यू बोथ आर राइट, कोरोमंडल कोस्ट। व्हाई? चोला एम्पायर वाज देयर, सो चोला मंडल कोस्ट कह देते हैं उसको, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोरोमंडल कोस्ट कहा जा रहेगा ना। सो चोला एम्पायर वाज देयर। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये वाला जो मुंबई से अगर आप गोवा जाओगे, इस कोस्ट को क्या कहते हैं? When you get it's a very nice train travel if you get a chance to go from Mumbai to Goa. That coast is called as what? Konkan coast. Konkan railways are there, which have recently become a part of Indian Railways, है ना, officially. Konkan coast, right? अच्छा, एक और है, मैं I'm making it with some different color. So let's say I'll make it with blue color. ये वाला in Karnataka, which is what is the coast? This coast को क्या कहते हैं? Anyone? I had shown in the option. It was there in the option. ठीक है. So it is called as Kanara coast. ओके, के से या सी से लिखते हैं। हाँ, तो ये वाला जो है लास्ट वाला, ये वाला था, ठीक है, उसका आंसर। ठीक है, आई थिंक कारावाली करके भी समथिंग कुछ लिखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कारावाली भी कहते हैं, राइट आशिम, यू वर राइट। ठीक है, इसको कारावाली भी कहते हैं, यस, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, खैर, तो हम लोग इतना कुछ जान लिए, राइट, वी हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग द कोस्टल लाइंस। द नेक्स्ट इज विच आर द, अच्छा एक चीज और कोस्ट से याद आ गया, the length of the coastline, what is the length of the coastline? Earlier the length of the coastline was 7,500 something kilometer, है ना, but now with the new calculation, what is the new coastline length? Anyone roughly बता दीजिए ऐसे, let me check the exact one, आप बताओ। 11,000 something as far as I could remember, 11,098.81, right? हाँ, very good, Ishita and Ashim, right? हाँ, 11,098.81 किलोमीटर, ये था 7516 था, ठीक है, एग्जैक्टली। खैर 7500 याद रख सकते हो, ठीक है, और 11,000 अब कैसे हो गया, बोलो सर एग्जैक्टली, एक बैग इतना लंबा कैसे हो गया? बिकॉज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन हैज बीन चेंज्ड, राइट, दैट इज हाउ यू शुड नो। इफ समवन इज आस्किंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, तो क्या होगा आंसर? Which state is having the longest coastline? सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? यस आशिम, वेरी गुड, द स्टेट ऑफ गुजरात, है ना, ये वाला, नॉट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का तो इतना सा है बस, दिस वन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज गुजरात। हाँ, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ आई होप इट इज अ इजी क्वेश्चन। अच्छा, अगर यूटी में देखो तो अंडमान, हाँ, which of the following coast lies on the eastern coastal plain, and I think we have not discussed. हाँ, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड, मेनी पीपल आर राइटिंग। द नेक्स्ट है ना, which of the following coast island is located in Arabian Sea? A very easy question. और उसकी कैपिटल ही बता दीजिए, प्लीज टेल मी द कैपिटल आल्सो। Yes, Ashim and Mahendra and Pranshi, you all are right. C is the right answer, Lakshadweep Island. Yes, Shalja, you all are right. C is the right answer to this question. Okay, तो ये अरबियन सी है, ये लक्षद्वीप है, और इसकी कैपिटल बताना है, कावारती। वेरी गुड शिविका, हाँ, कावारती, नहीं पारादीप तो ओडिशा में, वो नहीं होगा, कावारती, हाँ, यस, शिविका एंड प्रांशी, यू बोथ राइट, हाँ, महेंद्र राइट, हाँ, गुड। Let's move on to the next one. The Andaman and Nicobar group of islands are also known as what? ठीक है, बता पाते हो कि नहीं? एंड इसकी भी कैपिटल बता दो।
Yes, the right answer is Emerald Island. Very good. Many people writing B. Yes, Adrija, Ashim, Pranshi, all right. हाँ, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है. वेरी गुड. पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. तो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, क्या आंसर होगा? पहले आंसर करो. सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके क्लास हो. नहीं, ऐसा कुछ बैच नहीं है मोहम्मद नजाक. यू कैन वॉच द संडे क्लास. ठीक है, सेपरेट एक्सक्लूसिव तो नहीं है कुछ ऐसा क्लास, है ना. सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, देन द आंसर वुड बी हियर. हाँ, इंदिरा पॉइंट. ठीक है, सदर्न मोस्ट टिप. ठीक है ना. और अगर ये पूछा जाए सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, देन व्हाट शुड बी द आंसर? सो मेनलैंड इंडिया मतलब आइलैंड की बात नहीं, अब ये जो मेनलैंड है इसकी बात हो रही है. तो ये है मेनलैंड इंडिया, है ना. तो इंदिरा पॉइंट से थोड़ा सा नॉर्थ है ये. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कन्याकुमारी. बट व्हाट इज अनदर नेम फॉर दैट? कन्याकुमारी इज फाइन. देयर इज अनदर नेम. एक्चुअली अनदर नेम नहीं है, वही है कन्याकुमारी. देखो हुआ क्या था, आई वाज सीइंग अ पीवाईक्यू ऑफ सम एग्जाम and they did not, they asked which of the following is the southernmost tip of mainland India, and Kanyakumari was not mentioned. So the word mentioned was Cape Comorin. ठीक है, ओ वही चीज है, इंग्लिशाइज वर्जन है उसका. ठीक है, why I'm telling you, because if you see this in exam you might get confused कि कन्याकुमारी तुमको मिल ही नहीं रहा ऑप्शन में. I am not able to find. So Cape Comorin is nothing but Kanyakumari. Okay, so you should be careful about it. It is in Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, because sometimes the question maker try to confuse the question a student. ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा करते हैं, घुमा देते हैं. अब बच्चा सोच रहा है कि कन्याकुमारी दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. जैसे आपने देखा होगा गंगा को जो है ना ब्रिटिश को कैसे पढ़ते हैं, गैंजेस, है ना. तो क्या इंग्लिशाइज वर्जन है बस. जैसे एक बहुत फेमस आदमी थे रविन्द्रनाथ ठाकुर. Have you heard his name? But he was Englishized. His name is Englishized as Rabindranath Tagore. But original नाम था उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर. ठीक है, सो ये ब्रिटिश लोग वैसे पढ़ते थे ना, पढ़ नहीं पाते ठीक से, so they used to pronounce it like that. So something like that is there. कन्याकुमारी and Cape Comorin उसे घुमा दिया गया. ठीक है, so nothing to worry. If the exam question comes, you have to answer it accordingly. The next is which city is called a city of lakes. ये CUT का PYQ है, 2-3 बार पूछा हुआ अभी recent years में मैंने देखा था. City of lakes, एक बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए थे, तो ये पता होना चाहिए. Yes, very good. It's a beautiful, nice place to visit in the state of Rajasthan. It is having a lot of lakes, Pichola Lake and many other lakes. So C is the right answer to this question. ठीक है, राजस्थान में आपको मिलेगा, पता होना चाहिए. Yes, मोहम्मद नजाक, उसकी प्लेलिस्ट है. Go to our channel, प्लेलिस्ट में जाना, स्क्रॉल करना, इसके we have separate playlist for that. ठीक है, स्टैटिक जीके का. इस जैसा थंबनेल आपको विजिबल हो रहा है ना, वैसे ही थंबनेल का प्लेलिस्ट होगा. Okay, you will find that. The next is which of the following river flows towards the west. मतलब इनफैक्ट लास्ट ईयर का भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, एक तो इस साल का चलाएं और लास्ट ईयर का भी उसमें कंटेंट है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो. प्लेलिस्ट इज देयर, है ना. इसमें से कौन सी रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है इंडिया में? बिकॉज मेजॉरिटी बिग रिवर्स फ्लो इन द ईस्ट, बट कुछ रिवर, छोटी रिवर ज्यादा वेस्ट में जाती है ना, एक दो को छोड़ के. व्हाट इज द राइट आंसर? देखते हैं. एनीबडी फ्रॉम जमशेदपुर वॉचिंग माय क्लास को है? जमशेदपुर में कौन सी रिवर गुजरती है? एनीवन? Which river crosses through Jamshedpur? Subarnarekha is in Jharkhand. Very good, Ashim. Great. Your GK knowledge is very good. So Jharkhand में वेस्ट की तरफ नहीं आती. सुबर्णरेखा रिवर एक्चुअली गोज थ्रू जमशेदपुर. टाटा जिसको कहते हैं, जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर टाटा.
because here you will find the plant of Tata. So ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, so 1 काट दो, 1 काट दो, we are left with 2 and 3, 2 and 3 सही है, 4 भी सही, साबरमती, हाँ, so the right answer is B. ठीक है, B is the right answer to this question. साबरमती ने बहुत फेमस रिवर पर है, साबरमती आश्रम सुना है गांधी जी का, डांडी मार्च साबरमती आश्रम है ना, साबरमती रिवर अहमदाबाद से पास होती है, ठीक है। और अभी रिसेंटली ब्रिज कोलैप्स हुआ था माही रिवर पर, यू रिमेंबर रिसेंटली देयर वाज अ ब्रिज कोलैप्स दैट हैपेंड, करंट अफेयर्स में था पार्ट में, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. And what is so special? There is something special about Mahi River in geography. We had discussed that also. सर आपके इस साल जेएमआई में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आया था. Oh great, मोहम्मद रज़ाक. I'm very happy that you got benefited directly from my classes. ठीक है. So keep on watching my class, है ना? That would be helpful for you all. बताइए, what is so special about Mahi River? बताते, चलो देखो पहले सारे रिवर पहचान लेते हैं. देखो जनरली क्या होती है, बड़ी जो बिग रिवर्स है, इन जनरल द बिग रिवर्स आर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल डायरेक्शन, ऐसे जैसे मैं दिखाता हूं. गंगा, दिस इज गंगा गोइंग लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गंगा, आई एम मेकिंग द डायरेक्शन, ठीक है. यमुना ऑल्सो लाइक दिस, है ना, ठीक है. गोमती हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, सोन हो गया, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल बिग रिवर्स, ठीक है. हाँ, क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, वेरी गुड आशिम, हाँ, वेल डिस्कस दैट. हाँ, और अब आप देखोगे यहाँ पर ऐसे महानदी स्टार्ट होती है, इट गोज लाइक दिस, यहाँ पे सुबर्ण रेखा है, सो मेनी अदर रिवर्स, ये सब ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे बह रही है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, बिग रिवर्स, है ना. वेस्ट में भी जाती है छोटी छोटे रिवर, बट 2 आर बिग वंस, वन इज कॉल्ड एज नर्मदा एंड अनदर इज ताप्ती और तापी, ठीक है. यहां पर ऐसे समथिंग यहां पे आपको मिलेगा साबरमती विच क्रॉसेस थ्रू अहमदाबाद, ठीक है. अहमदाबाद साबरमती आश्रम इज आल्सो देयर, तो यहां पर कहीं पे आपको अहमदाबाद मिलेगा, ठीक है. और माही रिवर में इसलिए पूछ रहा था, ये ऐसे घूम के आती है ऐसे, लाइक दिस इज माही रिवर, समथिंग लाइक दैट. एंड स्पेशलिटी ऑफ माही रिवर इज, तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है एंड इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है. इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार काटती है, और इसीलिए स्पेशल है ये, ठीक है. और इस बार अभी न्यूज में था रिसेंटली, बिकॉज वी हैड सीन एन अनफॉर्चुनेट ब्रिज कोलैप्स आल्सो इन माही रिवर, दैट इज व्हाई आल्सो इट वाज वेरी मच इन द न्यूज, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, चलो इससे अब जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, एक सवाल पूछता हूं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? चलो मैं आपके लिए बना देता हूं ऐसे, इट इज गोइंग लाइक दिस. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका लॉन्गिट्यूड है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना. दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 8 states, very good. Ashim, okay, I am sorry, person is also Adrija, Ishita, Sovir, Shalja, Mohammad Nazak, good. 8. तो हम लोग डिस्कस कर लें. बताओ आप वेस्ट से ईस्ट बताओ, सबसे विच स्टेट्स इट कवर, ऑल द 8 states बताओ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो मैं आपको बताता हूं, द वेस्टर्न मोस्ट इज, ये वाला कौन सा स्टेट है? प्लीज टेल मी विच दिस इज विच स्टेट विच आई हैव हाइलाइटेड विद द पेन. एकदम परफेक्ट बनाया हूं, एकदम सारा स्टेट्स टच कर रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है. गुजरात, वेरी गुड. सो फर्स्ट स्टेट टच, हाँ गुजरात. वेस्ट से अगर आओगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. यस आशिम, ग्रेट, वेरी गुड. हाँ वेरी गुड आशिम. ये वाला कौन सा स्टेट है? सेकेंड वन, राजस्थान, ठीक है. थर्ड वन जो ये बीच में आप देख रहे हो, ये बड़ा सा जो स्टेट है, ये है एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है. उसके बाद ये वाला देख रहे हो ऐसे से, दिस वन, है ना, ये है छत्तीसगढ़,
फिर ये वाला आप देख रहे होगे, ये वाला है झारखंड, ठीक है। फिर ये वाला है वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। दिस वन इज त्रिपुरा एंड दिस वन इज ये मणिपुर हो गया, मिजोरम, ठीक है। मणिपुर से नहीं गुजरता है एज फार एज आई कुड रिमेंबर। मिजोरम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस। ठीक है। सो आशिम यू वर राइट, बट आई थिंक वन वाज स्लाइटली रॉन्ग। मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा, ठीक है। सो दीज आर द 8 स्टेट्स दैट यू शुड बी नोइंग। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, समथिंग लाइक दैट। एक दो बार एग्जाम में मैंने देखा था क्या पूछे थे कि विच सिटी, नियरेस्ट सिटी आपको बताना है, एंड दे गिव सम ऑप्शन। जैसे एक ऑप्शन दिए थे लखनऊ, तो लखनऊ यहाँ हो गया। दे गिव रांची, तो रांची क्लोज में है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। They gave one option like this कि बैंगलोर तो नीचे हो गया है ना, वन ऑप्शन इंदौर। सो दे से कि which of the following is nearest to tropic of cancer। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैप याद रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो समटाइम्स दे डू आस्क, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं कभी कभी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द endangered Asiatic lions can be found in which of the following national park। This is the only place where it is found in the entire world. No, Asiatic lions. Yes, Ashim, Mahendra. I am sorry, you all are right. हाँ, गिर नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? Where do you find? गुजरात, है ना? D is the right answer to this question. So somewhere here नीचे में कहीं पे मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला पेनिनसुला है इसको क्या कहते हैं? What is that called? Gir National Park. It is in which peninsula? Anybody from Gujarat can answer me. रन ऑफ कच्छ नहीं है वो, नहीं 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 नहीं, ये है रन ऑफ कच्छ। सो रन ऑफ कच्छ तो है भी नहीं। गल्फ ऑफ कच्छ ना, वो भी नहीं होगा। गल्फ ऑफ कच्छ जो वाटर बॉडी होता है ना, उसको बीच में, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। मतलब ये जो बीच में आप देख रहे हो ऐसे पानी क्या हुआ है, ये वाला हिस्सा, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। सो वाटर बॉडी। ये जो पेनिनसुला है मैंने बताया ब्लू से, इसको कहते हैं काथियावर, काथियावर या सौराष्ट्र पेनिनसुला। सौराष्ट्र नाम सुना होगा जरूर, ठीक है। और यहां पर जो वाटर बॉडी, ये वाला दिखाते हैं, इसको मैं कोई और पेन से बनाता हूं, पर्पल से। ये जो वाटर बॉडी है ना, यहां पर आपको सूरत मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कैम्बे, सुना है नाम, या खाम्बात, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। और यहाँ पे एक बहुत फेमस सिटी है सूरत, विच इज एक्चुअली ऑन नर्मदा रिवर, है ना। सूरत है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो बड़ौदा मिलेगा। दिस इज एक्चुअली, सूरत इज द लार्जेस्ट डायमंड कटिंग इंडस्ट्री फैक्ट्री है, ये लार्जेस्ट डायमंड कटिंग फैक्ट्री, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो कितना सारा चीज आपको मालूम हो गया ज्योग्राफी गुजरात से रिलेटेड, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यू शुड बी knowing about, because of course the questions are asked. In which state Tapovan hydroelectric power project is located? उस टाइम पर न्यूज में चला था एक टाइम पर, but still if you know it you can answer. A few years back it was in the news because we had seen, किसी ने जोशी मठ का नाम सुना है? जोशी मठ, जोशी मठ में cracks were seen in the houses 2-3 years back. Because it was believed that it was slightly going down, the city was something like that. सुना था उत्तराखंड में, चमोली उत्तराखंड। यस आशिम, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। मतलब ये आया था कि देखो ये जनवरी 2023 में, सो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years बैक। हाँ, ज्योति मठ न्यूज में था, जोशी मठ। उसमें वो ये थिंकिंग, मतलब ये कि उसका थोड़ा सा ससर, मतलब इट वाज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ व्हाटएवर यू कैन से सिस्मिक रीजन
और एटसेट्रा एंड ऑल. तो उसमें रेसिडेंट्स ने कहा था कि तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो द रीजन. सो दिस वाज इन द न्यूज एट दैट टाइम. ठीक है, खैर है ना. तो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर आपको मिलेगा जोशी मठ. Okay, yes, so the right answer was D. Yes, Adija, you were right. Doksh Anand, you are right. Ashim. The next is which state has the high which of the following has the highest biodiversity? ये बताओ. Highest biodiversity. The right answer is tropical rainforest, right? है ना. Why? देखो बायोडाइवर्सिटी कहां पे ज्यादा होती है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना. And if there is more biodiversity, यानी bio होता है life, यानी plants and animals की variety ज्यादा है. If there is more variety of plants and animals, more stable ecosystem. Why? Why more stable ecosystem? Because more strong food web. एक दो अगर बीच में स्पीसीज मर भी जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है? बिकॉज इट इज एक्चुअली नियर इक्वेटर. Yes. So when things are near equator, you will find more rainfall. What we call it as convectional rainfall. Right? And that is why near equator, like Amazon forest, Congo forest, you will find huge, big size forest in equator because you will find everyday rainfall. B is the right answer to this question. Anybody from South India? I'm sure you must be aware. There is something called as 4 o'clock shower. Okay. Which is what we call it as. It happens near equator mostly. That every day in the morning the sky will be clear and around 4 o'clock there will be a little rainfall. Okay. So especially people from Bangalore and those places are aware of this. अक्सर होती होगी शाम में बारिश. What is biome? Biome में अभी नहीं जा रहा हूं मैं because it will be a big South India में you will find this more. Biome is actually, I'm not going in that detail. It's a big level of ecosystem like this. A ecosystem at a larger level where by and large roughly the temperature and pressure are same temperature and the flora and fauna more or less are of same type. That is the term biome is used. ठीक है. Okay, है ना. So let's move on. हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा बताता हूँ. This is actually equator is passing. ठीक है. So around the equator, 0 degree, you will find more rainfall, right? Because of convectional reason. And that is why Amazon forest you will find here. Very dense forest, Amazon forest. Similarly, you will find Congo forest because here is Congo river is there. Very dense forest. Okay, here also you will find a lot of dense forest. So in equator region, you will find heavy, densely populated forest. Okay. Bermuda Triangle will come. Yes, Mahendra will come. That थोड़ा सा दूर है वहाँ पे. Indonesia, हाँ वही Indonesia and Malaysia region. That is why Indonesia में there are a lot of tourism also. Bali Island वगैरह यहीं पे पड़ता है. Bali Island, etc. ना. I'm sure you must be aware. So this is the reason. And Amazon forest को है ना, we call it as lungs of the earth है ना. I'm sure you must be aware because it creates a lot of oxygen. ठीक है. Now, in which ocean you will find Bermuda Triangle? बताइए. ये PYQ MH set का तो of course you should be knowing. And what is it related with? I mean, there are some conspiracy theories. वही बता दो. What is that? North Atlantic, right. हाँ. कुछ लोग Pacific बता रहे हैं, but the answer is Atlantic Ocean. Is the right answer. What is the conspiracy theory or what are the beliefs associated with this? Anyone? Disappearance of planes, large gravitational force. Yes, Adrija, Utsav, Mahendra, you all right. So the right answer, Bermuda Island is a island, and it has its cricket team also. They had once played in, as far as I could remember,
They had played in cricket World Cup also. Okay. So basically, let me show where exactly it is. So this is Atlantic, this is America. So इस वाले region को मैं zoom करता हूँ. This is USA है ना, this is Puerto Rico. Somewhere here you will find Bermuda Island. ठीक है, ठीक है, okay. And ऐसे कुछ फ्लोरिडा से ऐसे कुछ बनता roughly something like this. Okay, and this is of course Atlantic Ocean. So what is the belief? This is actually key. If any of the ship, if this is a ship, it goes in this region, or if there is an aeroplane which goes in this region, it will be attracted by a magnetic force and it will never return back. But this is of course a fake news. There's nothing like that. These are of course. Now you'll be saying, sir, how can you say? Please do understand one thing. There is something called as black hole in the universe. Anna, the concept was given by Einstein. Einstein research, Anna, after 100 years, people are researching on black hole, that how so powerful things are getting attracted because of extreme form of density. How can this be possible here? And if this is possible here, the scientists would have come up with a lot of proofs, evidences. These are just fuzzy, fake. There's nothing like that. Okay, so don't get fooled by these fake stories that Bermuda Triangle, you will go and the plane will get attracted or something like that. It will never return back. Okay, so that is what you should know. But of course, from exam point of view, you should know it is the right answer. नहीं तो यहाँ बरमुदा में लोग रहते हैं, वो भी खिंचा के अंदर चले जाएं. Bermuda Island, it plays cricket. Bermuda cricket team is there. It played an international World Cup match. I don't exactly remember 2008 वगैरह में, I think, because I remember when I used to watch cricket that there was a cricket team. So ideally they should also get attracted or something like that. ठीक है, so इस सब पर उतना believe नहीं करने का है. Okay, I think we should stop the class here and we will be discussing in the next Saturday class. ठीक है, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.